Assalamu alaikum. Welcome to MSK Mentor. This is me, Muhammad Suhail, and I hope you all will be good. Today, I brought some important, interesting topic, and the topic is noun. And what is noun? Noun is a word that names a person, place, or thing. नाउन एक लफ्ज़ है जो हम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को देते हैं। उर्दू में इसकी मानी है इसम। सो नाउन is a word that represented by person, place or thing. Everything that we can see or talk about to represented by a word, and that word is a noun. हर वो चीज़ जो हम देख सकते हैं या हम उसके बारे में बात करते हैं, वो वो चीज़ जो हम मतलब उस लफ्ज़ के ज़रिए उसको ज़ाहिर करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, उस लफ्ज़ को, उस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सो यहाँ पे नाउन के चंद एग्जाम्पल हैं। सो जिस तरह मैंने कहा कि नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। person, like here the name of जावेद, this is called, ये एक शख्स की मतलब नेम है। तो हम इसको मतलब हमने इसको नेम दिया जावेद। जावेद के नाम से हम उसको मतलब बुलाएंगे। अगर हम इसको नेम नहीं देंगे किसी भी शख्स को, तो हम उसको किस तरह बुलाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है आपने नाम देना। उसके बाद लाइक आसिम, जावेद। एंड अगर हम प्लेस की बात कर ले, जिस तरह इस्लामाबाद, तो वो एक प्लेस है और उसको हमने नाम दिया। अगर आपको मतलब किसी को कहे कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो डायरेक्ट समझ जाएगा। लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान इज ए कंट्री। एंड थिंक मतलब मीन्स टेबल, चेयर, दिस इज ऑल ए थिंग। सो लाइक पेन, मार्कर, दिस इज ऑल थिंग्स। ओके, इसको हमने नाम दिया, तो हम इसको नाम से पुकारते, लाइक मार्कर। ओके, अगर हम किसी को मतलब किसी चीज़ को, शख्स को या जगह को अगर हम नाम ना दे, तो हम उसको बुलाएंगे कि मतलब पुकारेंगे कैसे, उसको कॉल किस तरह करेंगे? तो इसके लिए नाउन ही बहुत ही ज़रूरी है, नाम देना किसी शख्स को, जगह को या चीज़ को। तो आई होप दैट you have learned from this way that what is noun and its example, and inshallah I will bring you in next video the types of noun. Thank you. Like my video and subscribe my channel.